Hello, dear students. This is Dr. Sirajuddin again with the fourth lecture on the weed management. So, in the first lecture, we started with the weed nomenclature. In the second lecture, we studied the classification of weeds on the basis of life cycle or ontogeny. And in the last lecture, we studied about the classification of weeds based on the morphology. And today, I'm here to discuss the classification of weeds based on number of cotyledons. तो जनरली जब भी cotyledons की बात होती है या तो प्लांट्स की अगर हम कैटेगराइज करें तो आपके माइंड में सबसे पहले आ जाता है यस वी हैव टू ऑप्शंस है monocots and dicots, and you are very right. So let us start this lecture. So based on the number of cotyledons, yes, we have two categories here: monocotyledon weeds and dicotyledon weeds. एंड जनरली अभी तक जो हमने पढ़ा है या जो हमको पढ़ाया गया है वो यही पढ़ाया गया कि दैट मोनोकॉट्स आर द ग्रासी वंस, और जिनके जो वेनेशन हो पैरेलल वेनेशन होती है और तो ग्रासी टाइप्स होते हैं, और जितने भी ब्रॉड लीफ वीड्स हैं दे विल कम अंडर द डाइकोटिलेडन्स. दे आर ट्रू और आप भी बिल्कुल सही हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि आपको जानने पड़ेंगे. सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग दैट टू. Okay, so we have two categories here, monocotyledons and dicotyledons. So in the monocots, we have further divided the weeds into narrow-leaved monocots and broad-leaved monocots. So see, we have broad-leaved monocots too. And in case of dicotyledon weeds, we have broad-leaved dicots and narrow-leaved dicots. Okay, so let us take them one by one. So as we are very much aware and you all are very familiar with the word monocot, that is single cotyledon. So the plants whose seedlings bear only one cotyledon, they are referred as monocot and monocots. So monocots are basically have parallel venation and flower parts in 3 or multiples of 3. Always remember. And most monocot weeds are found in only 2 groups, grasses and sedges, although other group exists. So monocots have 13 orders. Always remember कि जो monocot weeds हैं उनके कितने orders हैं? 13 orders होते हैं. So like in the previous slide we have gone through that monocots have been divided into two categories: narrow-leaved monocots and broad-leaved monocots. तो सबसे पहले हम narrow-leaved monocots, जो कि कोई exception नहीं है कि ज़्यादातर जो monocots होते हैं, the majority of the monocots are narrow-leaved ones. So like Phalaris minor, Cynodon dactylon, Digitaria sanguinalis, Polypogon monspelensis, then Avena fatua, Poa annua, and number of weeds are there which belongs to the grassy family. They all come under the narrow-leaved monocots. But what do you need to stress on is broad-leaf monocots. Yes, we do have broad-leaf monocots. They are having large or broad leaves with the palmate-like venation. So you need to remember, like I have ticked Commelina species, Cyanotis species, and Eichhornia crescips. So Eichhornia crescips, you see, Eichhornia crescips is also known as the water hyacinth. तो 3 weeds आपको जो एक्सेप्शनली याद करने हैं, जो कि आपके फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कितने भी एग्रीकल्चर के से रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं आपके, जैसे SRF, JRF, उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कौन सा ऐसा मोनोकॉट वीड है जो कि ब्रॉड लीव होता है. सो वी हैव 3 हियर: Commelina species, Cyanotis species, and Eichhornia crescips. Moving on. Now, dicots. So as the name refers, the plants whose seedlings produce 2 cotyledons or seed leaves. So dicots are usually having netted leaf venation and flowering parts into 4, 5s or multiples thereof. So leaves are white and they are commonly called broadleaf plants. So they have 56 orders. और मैंने monocots में आपको कितने बताए? 13. So monocots के 13 orders होते हैं और dicots के 56 orders होते हैं. And always remember, in the previous lecture I also discussed that the Asteraceae is the most important family for the dicot weeds. Stress on this, okay? Now broadleaf dicots. So this is not an exception right now. हमको पता है जितने भी broadleaves हैं वो सारे dicots में आएंगे. So the majority of the dicot weeds are broadleaf weeds. So Amaranthus viridis,
Amaranthus spinosus. This is not cynosus, it is spinosus. Then Bidens pilosa, Trianthema portulacastrum, then Trianthema monogyna, Chenopodium album, Rumex species, Digera arvensis, Solanum nigrum, Malilotus indica, Malilotus alba, Argemone mexicana, Parthenium hysterophorus. So we have number of weeds which belong to this category, broadleaf dicots. But again, what do you need to stress on? The narrow leaf dicots. Yes, we do have dicots which have got narrow leaves. So we have two exceptions here, Aspergilla arvensis and Plantago lanceolata. So Aspergilla arvensis belongs to the family Cryophyllaceae, and Plantago lanceolata, that belongs to the family Plantagenaceae. So you need to remember, this is also asked in the competitive exams frequently. तो मैं बार बार इस पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, तो आपको ये वाले जो एग्जाम्पल्स हैं वो तो आपको याद करने ही करने हैं. ओके, सो बिफोर आई फिनिश दिस लेक्चर, आई हैव सम डाउट्स कि स्टूडेंट्स आई थिंक इतना ज़्यादा देख नहीं रहे हैं, इतना ज़्यादा पे अटेंशन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ क्वेरी. सो क्वेरी नहीं आ रही है, इट मीन्स या तो आप लेक्चर देख ही नहीं रहे हैं या फिर आपको लेक्चर पूरा ही समझ में आता है. तो मैं सिर्फ देखने के लिए कि वेदर यू आर अटेंटिव इनफ और आप लेक्चर्स देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, मैं क्वेश्चन रेज करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर और सारे के सारे जो सीरियल्स होते हैं वो पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, most of the serials. But tell me that serial which does not belong to poaceae family. तो आपको मुझको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सा सीरियल है जो कि पोएसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है. आपको मुझे उसका नाम भी बताना है और उसकी फैमिली भी आपको मुझे बतानी है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. डू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब my YouTube channel Agri-Tutorial, and do not forget to press the bell icon. Thank you very much.